Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing fine and I hope I'm audible to you. Please confirm in the chat box that you can hear my voice. You can simply write yes, okay, something like that. That gives me an impression that you can hear me clearly. Okay, so that's great. So today we are going to talk about speech acts. This is another topic which is closely related to point of view as well. I hope you have gone through the point of view thing. I did look at your assignments or the homework that you did. So your homework was exactly almost the same, the material that I have uploaded as well, from which you're going to have your quiz as well. However, moving forward, when I say speech acts, now we are moving forward or we are moving towards the spoken aspect of language. So, what does it mean by a speech act? Any idea? Verbal interaction? Okay. Now, speech has to do with verbal interaction, of course, where you're going to use your spoken faculty, which is attributed to you, right? Now, acts are something that has to do with performance. Laiba says anything related to speaking. Eamon says how our spoken discourse is being observed. Rabia, I have. It's just that I want to finish this topic after 10 to 15 minutes. When I'm done presenting it, then I can let you guys speak on the mic as well. Otherwise, if all of us speak together, then it becomes a problem. So let me finish first, and then you can definitely add your points. So most of you have got it right that speech acts has to do with speaking and how we act through speech. Do we act through speech? Yes or no? Just simple yes or no. Do we perform through our speech? Yes. In one way or another, we do. And as you know, in English language, we have word classes, and certain word classes they have an action or a performance to perform. And this particular theory has a crucial role in, negotiating of the meaning. It helps us come to that conclusion that you keep on asking in the class that how come this action tells us this kind of meaning. So all word classes, they also contribute to it. By recognizing that language use is not just about conveying information, but also performing actions, speech act theory offers a framework for understanding how speakers and addressees collaboratively negotiate meaning in social interactions. Speech acts concerned with meaning, use, and action. They represent language use in context and account for the speaker's and addressee's verbal and non-verbal contribution to the negotiation of meaning of interaction. Now, you must be wondering that why this author keeps on calling it negotiation of meaning in interaction. It simply means how they use language in order to showcase some kind of action that has taken place through the speech, verbal speech. Speech act theory can be, or speech acts can be categorized into three main types: locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Have you ever heard these three terminologies before somewhere in your courses or not? Not at all. Well, they're not those very difficult, they are very easy and self explanatory. Locutionary acts refer to the literal meaning of an utterance, while illocutionary acts refer to the intended meaning. If you remember the surface meaning and the deep meaning, and pragmatics and semantics, the difference between semantics and pragmatics, or surface meaning or deep meaning, it's the same, right? Locutionary has to do with the literal meaning, face value meaning. However, illocutionary has to do with the intended meaning, where we read between the lines, right? How do we read between the lines? When I say something with conviction, you will see some kind of force in it. However, if I say something out of frustration or something, you'll see how I use language in that matter.
Just remember, when we talk about these three categories in speech acts, they have to do with speech. And perilocutionary acts refer to the effect of an utterance on the listener. So, locutionary acts refer to the literal meaning, illocutionary refers to the intended meaning, and perlocutionary is the effect of an utterance on the. For example, let's consider the following exchange. Speaker A, can you pass me the salt? Speaker B, sure. Now, in this particular exchange, Speaker A's locutionary act is a request for salt, while the illocutionary act is to perform a directive speech act. Now, if you research and search speech acts, you will find other categorizations as well, one of which is called directive speech, जहां पर वो simply एक performance को या एक चीज करने को direct कर रहा है. It's asking, sorry, it is giving a direction to pass the salt. And the perlocutionary act is to elicit a response from speaker B to pass the salt. Did you understand the example or not? See, we have one sentence जहां हमने देखना है literal meaning क्या है, intended meaning क्या है और उसका effect क्या है. Does it make sense? Is it making sense? Well, speech act theory also highlights the role of context in shaping meaning. अब आप देखें, जब जब से हम स्टाइलिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, पहले लेक्चर हो या जो लास्ट वीक लेक्चर है, कहीं ना कहीं we are always talking about how meaning is shaped, how flares and shades of meaning are added, and speech act theory is no less. It also has something to offer to the meaning making process. Speakers and addressees must take into account situational factors such as social relationship between speakers and cultural norms governing language use and the physical setting of the interaction. For example, a request for the salt may be interpreted differently in a formal dinner setting compared to a casual family dinner. See, if we are in a table talk or if we are on a luncheon meeting, a professional lunch, we will ask for salt in a certain manner. लेकिन अगर हम घर के कहीं आपस में बहन भाई बैठ के खाना खा रहे हैं, अम्मी अबू के साथ खा रहे हैं, तो वो एक कैजुअल मैनर के तौर पे हम कहेंगे. वो जो हमारी फोर्स होगी स्पीच की, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा, पोलाइटनेस का डिफरेंस आएगा, डायरेक्टिवनेस का डिफरेंस आएगा, सोफिस्टिकेशन का डिफरेंस आएगा. घर में तो हम ये भी कह देते हैं ना, साथ बहन या भाई बैठा हो, वी कैन सिंपली से यार सॉल्ट पकड़ाना. लेकिन अगर हम एक लंचियन में है, एक डिनर है, एक एनुअल डिनर में बैठे हैं, तो हम बड़ी सोफिस्टिकेशन के साथ with politeness we'll ask the next person, could you please pass me the salt? So the difference is situational as well. Here it says that the speaker and the addressee must take into consideration the situational factors. कि आप कौन सी environment में है, वहाँ क्या situation है और कौन से relationships वहां पर फॉर्म हो रहे हैं, ये अफेक्ट होंगे, तो उसकी बेसिस पे भी जो आप स्पीच एक्ट है उसको फॉर्मुलेट करते हैं. Furthermore, speech act theory acknowledges the importance of non-verbal communication in the negotiation of meaning. Gestures, facial expression, tone, voice, all of them, they have something to offer, and they influence the illocutionary force and perlocutionary effect of an utterance. ठीक है, अब अगर फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ड्राई हो, एंग्री हो, बहुत ज्यादा जॉली हो, हर किस्म का फेशियल एक्सप्रेशन इट हैज समथिंग टू ऑफर. सेम गोस फॉर टोन एंड जेस्चर्स. सो यू सी, स्पीच एक्ट्स में सिर्फ आपके पास स्पीच नहीं है, आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है. ठीक है. In conclusion, speech act theory provides a useful framework for understanding the complex ways in which speakers and addressees negotiate meaning in language communication by taking into account the meaning, use, and action of language. Remember, meaning, use, and action of language are the most important things in speech act theory, as well as the contextual and non-verbal factors that shape communication. Now, I have jotted down some examples over here, the novels that you told me the other day. In Pride and Prejudice, there are many examples of speech acts that can be categorized into locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts.
One example is when Mr. Collins proposes to Elizabeth Bennet, his locutionary act is to express his desire to marry her, while his illocutionary act to perform a directive speech act for asking for her hand in marriage. The perlocutionary act is to elicit a response from Elizabeth. So simply put, जब मिस्टर कॉलिंस प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ बेनेट को, तो वो एक डिजायर एक्सप्रेस करते हैं उससे शादी करने की, ठीक है, दैट इज locutionary एक्ट. ठीक है, illocutionary क्या है कि वो डायरेक्टिव स्पीच एक्ट फॉर आस्किंग फॉर हर हैंड, उसका हाथ मांगते हैं, तो वो एक परफॉर्मेंस के लिए कायल करने, कन्विंस करने की कोशिश करती है. However, the perlocutionary act is the response that is that what is Mr. Collin is going to get from Elizabeth Bennet. In this case, Elizabeth rejects his proposal, so the perlocutionary effect is the cause of disappointment. Now you keep on asking कि meaning कैसे बनता है. अब इस response से हमें पता चलता है that it causes disappointment and frustration for Mr. Collins. Now, this is not the only instance in Pride and Prejudice. You can quote any other as well, जो भी आपको पता हो. उसके अलावा, in Mrs. Dalloway, there are also many examples of speech acts that can be categorized into these three categories. One example is when Clarissa Dalloway invites Peter Walsh to her party. Her locutionary act is to extend an invitation, while the illocutionary act is to perform a directive speech act for asking him to attend her party. The perlocutionary act is to elicit a response from Peter. In this case, Peter accepts the invitation, so perlocutionary effect is to establish or reinforce their relationship. You see, perlocutionary ऊपर Pride and Prejudice में negative effect था, rejection थी, disappointment था, लेकिन डेलावे के केस में, मिसेस डेलावे वाले केस में, ये एक reinforcement and establishment को, यानी positive effect की तरफ जा रहा है. It is noteworthy and that speech acts can be complex and layered and can involve multiple illocutionary forces and perlocutionary effects. ठीक है, आप और चाहे तो और एग्जांपल्स भी इलिसिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन एलिजाबेथ बेनेट टेल्स मिस्टर डार्सी that his letter has made her realize the error of her ways, her locutionary act is to express gratitude for the letter. Intended, उसकी जो इंटेंशन है, राइट, उसका जो pragmatic meaning था, वो तो आपको समझ आ रहा है ना. The illocutionary act is to perform a commissive speech act. अब आप सोच रहे होंगे कि commissive क्या है, directive क्या है, ये मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि commission sentences क्या होते हैं, directive sentences क्या होते हैं, statement sentences क्या होते हैं, जो कि आपने ग्रामर में कभी ना कहीं जरूर पढ़े होंगे. The perlocutionary effect is to cause a shift in their relationship dynamic and pave the way for their eventual reconciliation. So you see, और भी आप अगर एग्जांपल्स देना चाहें, जैसे साइलेंट पेशेंट की आपने बात की थी, कोई और शॉर्ट स्टोरी आपको पता हो तो आप ये एग्जांपल्स वहां पर कोट कर सकते हैं. Overall, by analyzing the locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts in literary text, such as Pride and Prejudice and Mrs. Dalloway, one can gain a deeper understanding of the ways in which language use is not just about conveying information, but also performing actions and negotiating meaning in social interaction. ठीक है, तो ये स्पीच एक्ट्स है. अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक थ्योरी which has been given by Leach. ठीक है, let's read it together. Speech act theory as proposed by Leach posits that speech acts can be categorized into, यानी ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो लीच नहीं दिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स माइकलिडीस के जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पर जॉट डाउन कर दिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं. ठीक है, एक मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. Throughout the novel, Theo Faber, the therapist assigned to treat Alicia, engages in numerous illocutionary acts. For example, when he first meets with Alicia, he performs a representative speech act by asking her questions about her background. Representative speech act. पीछे हमने कमिशिव भी पढ़ा है और डायरेक्टिव भी पढ़ा है. ठीक है, he also performs a directive speech act when he tries to persuade Alicia to speak and open up to him. The perlocutionary effects of these speech acts are mixed, as Alicia remains unresponsive and Theo struggles to make progress in their therapy session.
Okay, do you understand the topic of speech acts, or do you need more clarity? It's not that difficult if you sit down and if you process it again. आप कोई भी अपना relevant novel अगर जो आपको पसंद है उससे भी examples देख सकते हैं, although ये आप ही लोगों ने मुझे novels बताए थे. So tell me, does it make sense, the speech acts and the three acts, major acts that we talked about, locutionary, illocutionary and perlocutionary? इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, मतलब कि आपके एग्जाम में ये किस तरह से आ सकता है? जस्ट प्रिपेयर इट एज ए नोट, नोट फॉर 10 to 20 मार्क्स. अगर 20 मार्क्स का आता है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जो मैंने आपके वीक नंबर 14 या 15 में अपलोड भी कर दी होगी, तो आप बस ये भी लिखेंगे तो ठीक है. बेस्ट होगा कि आप एक और एग्जाम्पल दें, प्राइड एंड प्रेजुडिस और मिसेस डेलावर के अलावा कोई शॉर्ट स्टोरी जो आपको समझ आती है आप वो दे दें. उसके बाद लीच को भी इसके साथ अटैच कर दें, साइलेंट पेशेंट भी कर दें, तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू गेट गुड स्कोर इन इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, गो अहेड एंड आस्क. मुश्किल तो नहीं है ना? मुझे तो नहीं लगता ये बिल्कुल भी मुश्किल है. बस आपने ये याद रखना है कि स्पीच एड्स में जो लैंग्वेज है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है, और इसमें स्पीच ज्यादा जो है उस पर फोकस है. बाकी तो यही हम लैंग्वेज के यूसेजेस और मीनिंग मेकिंग प्रोसेसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक. अच्छा, कैन यू मेक अ कनेक्शन बिटवीन स्पीच एक्ट्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू? जो पॉइंट ऑफ व्यू के आपने नोट्स बना के मुझे भेजे हैं, तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है? Now you can use your mic if you want to say something. You can use your mic, please. No connection? You're not able to make any connection between point of view and these speech acts? जी राबिया, पहले आप बताएं फिर फरजाना आप बताइएगा. जी राबिया. Absolutely. That's correct. What about you, Farzana? What you wanted to say, beta? Hmm. See, when narrative में जब let's say कि protagonist है, वो किसी character को कुछ harsh कहता है, ठीक है, वो भी एक speech act करता है कि वो कहता है कि I will slap you hard if you don't stop talking, right? उसने ये कह दिया, उसने एक action भी, directive action भी हमें अपनी sentence में करके दे दिया. अब अगर हम narration की बात करें, उसके point of view की बात करें, तो वो हार्शनेस या एग्रेसिवनेस शोकेस करना चाह रहा है. और इसी तरह अगर हम उसका स्पीच एक्ट एनालिसिस करें, तो भी वो एक एक्शन परफॉर्म करने वाला है विच हैज टू डू विद फिजिकल अब्यूज या फिजिकलिटी उसमें ऐड हो जाती है. तो दोनों पर्सपेक्टिव से आप इन दोनों को इकट्ठा जोड़ सकते हैं.
You're right, फरजाना, and so is Rabia. तो अगर आपको मतलब एग्जाम में इस तरह से कुछ आता है कि स्पीच एक्ट पे नोट रखे, पॉइंट ऑफ व्यू पे नोट लिखे, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप चाहें तो मैं आपको एक रीडिंग भेज सकती हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो बताएं। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो आप लोगों को समझ आ गया ना, कि नरेशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वो कैसे नरेशंस में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, मीनिंग मेकिंग करते हैं। सेम गोज फॉर दीज। जी जी। हम्म। देखिए ना सेकंड, देखिए ना थर्ड, देखिए जो ओमनिसियंट है उसका 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 ट्रिक या उसका कह लें स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है दैट इट नोज एवरीथिंग। ठीक है? and in order to know everything that is going on in a text, it has to be an outside source. जो inside होगा उसे सारे perspective तो पता नहीं हो सकते, लेकिन वो आपका confusion बिल्कुल बजा है कि क्या ये अलग है कि ये इकट्ठे हैं। it depends on the text, जिस text को आप analyze कर रहे हैं उस पे depend करेगा कि या तो ये एक हो जाएंगे या हम्म। हम्म। हाँ, अगर आप उसे ओमनिसियंट प्रूव करना चाहते हैं तो आप ना टेक्सचुअल रेफरेंसेस लोगे और आप उसे प्रूव कर दोगे। और अगर कोई और उसे ये कहना चाहता है कि वो ओमनिसियंट नहीं है, वो मतलब कि मेन नरेटर है या कोई और किस्म का नरेटर है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बाय अब तक तो आपको समझ आ गया होगा ना कि लिटरेचर में इट्स नेवर 2 + 2 = 4। if you are able to justify it with different textual references, then your point of view is justified as well, and so is somebody else's who wants to refute it. आपको पता है ना, लिटरेचर में जो एनालिसिस होते हैं, either they go in favor or they go against it. Both are acceptable. बस आपने उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, यानी उन नरेशंस को जिस तरह शो केस करना है, डिस्प्ले करना है, उसको उसी तरह से करना है। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपने शायद वो पढ़ी हो, उसका क्या नाम है, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है? अब उसमें एक बड़ा यूनिक यूनिक नहीं कहते, क्या कहते हैं, घिसा पिटा सा सवाल होता है कि हु अकॉर्डिंग टू यू इज द हीरो ऑफ द एंटायर एपिक पोएम दैट यू हैव रेड। अब कुछ लोग गॉड को कहते हैं और कुछ लोग सैटर्न को भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? टेक्सचुअल रेफरेंसेस के साथ। कि वो ये भी कहते हैं कि Saturn is also is very magnificent because it's only one of those people, गॉड को चैलेंज ही वही कर सकता है जो उतना ही मैग्निफिसेंट हो जितना गॉड है। और वो जस्टिफाई कैसे करते हैं? उसके स्पीच के थ्रू, द वे ही अटर्स अटरेंसेस। इसी तरह जो गॉड के उसमें लिखते हैं, फेवर में लिखते हैं, वो गॉड की स्पीच या उनकी जो अजमत पे जो लाइंस उस पोएम में होती है उसके बारे में बात करते हैं। जी फरजाना, आप क्या कह रहे हो? It's just that remember, omniscient narrator is different, but first person omniscient, second person omniscient, third person omniscient is another categorization. जी खतीजा, क्या किया?
देखिए, अगर आपको लेट्स से योर पॉइंट इज वेरी मच वैलिड एंड वेरी वेल पुट, कि देखिए ना, हर राइटर भी अपनी जो थेरीज है या अपनी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज डिफरेंशिएट करने की किसी न किसी तरह से कोशिश करता है। अब अगर एग्जाम में लेट्स से आपको ओमनिसिएंट नरेटर पे लिखने को आ जाता है, तो आपको अगर दो ऑथर्स का, दो स्कॉलर्स या दो स्टाइलिशियंस का पता है कि उन्होंने डिफरेंट तरीके से ओमनिसिएंट नरेटर को डिस्क्राइब, डिफाइन या डिफेंड किया है, आप दोनों का लिख के एक एनालिसिस कर दें। अगर आपको दो नहीं पता, सिर्फ जेनेरिक पता है, जेनेरिक लिख के साथ एक किसी भी टेक्स्ट से एग्जांपल दे के कर दें। वो आप पे डिपेंड करता है। बेस्ट यही होगा कि अगर आप, लाइक यू सेड कि आपने लिटरेचर पढ़ा और आपने फिर कहीं और से पढ़ा, तो आपको दो सोर्सेज में दो डिफरेंट किस्म के मीनिंग पता चल रहे हैं कि ओमनिसिएंट को एक ऑथर किसी तरह से लेता है, दूसरा ऑथर किसी और तरह से। एक स्टाइलिशियन है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, उसका नाम है जेनेट जेरार्ड या जेनेट जेनीट। तो वो ये कहता है कि ओमनिसिएंट नरेटर जो है, जो 18th सेंचुरी में होता था वो डिफरेंट था, लेकिन 21st सेंचुरी का जो ओमनिसिएंट नरेटर है वो ऑल नोइंग है, उसको टेक्स्ट के बीच में भी पता है, टेक्स्ट के बाहर भी पता है। लेकिन जो 18th सेंचुरी का था वो लिमिटेड था उसके पास, क्योंकि आपको पता है राइटर भी जो है ना, आफ्टर 21st सेंचुरी और विद इन 21st सेंचुरी कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सिमिलरली जिस तरह टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये नरेटर्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो अगर आपको दो ऑथर्स पता है कि उन्हें ओमनिसिएंट नरेटर को कैसे एक्सप्लेन किया है, आप दोनों को लिख के उनका एनालिसिस करके आप उसको लिख सकते हैं। हाँ जी, उसमें नहीं, आप अगर ऑथर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको एक आउटलाइन बना के देनी थी कि आपका जो क्विज होगा ना इसके आसपास होगा। बाकी आपके जो एक्सटेंसिव नोट्स हैं वो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े हुए हैं ना। बेस्ट ये होगा कि आप लीच को ही देख लें, लीच क्या कहता है, पाउल सैमसन क्या कहता है, दो तीन फाउलर को देख लें, बस इन दोनों की बात देख लें कि वो ओमनिसिएंट नरेटर को अगर एक्सप्लेन करता है तो कैसे करता है, और उनको ही बेशक रेफर कर। अच्छा, इससे जो अगला हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, स्पीच एक्ट्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, मुझे बताएं आप में से कितने लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे हैं, जो ये वो कह सकते हैं विद कन्विक्शन कह सकते हैं दैट दे आर वेरी गुड एट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी राबिया, अच्छे हैं। अच्छा, यू आर रेजिंग, ठीक, सही है, सही। अब जो नया टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है style, thought, and presentation. Before I show it to you, can you guess कि style, thought and presentation में हम क्या बात करने वाले हैं, और क्या अभी तक जो हम बात कर रहे हैं क्या वो इसी की तो कनेक्शन तो नहीं है? देखिए, अगर हमने बात की पॉइंट ऑफ व्यू की या स्पीच एक्ट्स की, तो क्या वो थॉट प्रेजेंटेशन में भी आ जाते हैं कि नहीं आते? सोचें एक मिनट, उसके बाद बताएं। हम्म। हम्म। जी जी, राबिया आप बताएं पहले, फिर दूसरा बच्चा जी। हम्म। हम्म। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स, इट्स द सेम थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी वेल डन, वेरी वेल पुट जी। एमन, आप क्या कह रहे हो, बताएं। हम्म।
एब्सोल्युटली। देखिए ना, माइंड स्टाइल में हम कॉग्निशन की ही बात कर रहे थे ना, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में या कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स में हम यही देख रहे थे कि एक इंसान या एक करेक्टर कैसे सोचता है। उसके साथ हम पॉइंट ऑफ व्यू भी अटैच कर सकते हैं, स्पीच एक्ट भी कर सकते हैं, और थॉट एंड प्रेजेंटेशन। All of it can come within one domain, that is cognitive linguistics, and then we can move forward to cognitive stylistics. फिर mind style आ सकता है, उसके बाद point of view आ सकता है, उसके बाद narrators narrations आ सकती हैं, उसके साथ ही हमारे पास speech acts भी हो सकते हैं। And then ये जो अगला टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, this is a chapter in this book by स्टाइल एंड फिक्शन, जो बुक है आपको मैंने पहले भी शेयर की थी वही। तो इसमें यही चीजें बात हो रही है। बात वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच की। हाउ डू दे टेल अस अबाउट इट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। यहाँ पर उन्होंने उसको सिर्फ क्या कह लें, एब्रीविएशन दे दी है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। The essential semantic difference between direct and indirect speech is that when one uses direct speech to report what someone has said, one quotes the words used verbatim, whereas in indirect report, one expresses what was said in one's own words. Simply put, कि जब हम express करते हैं, जैसे हम में से कुछ जो लोग हैं वो हमेशा direct speech को prefer करते होंगे, they would be using direct sentences as compared to the indirect ones. What about you? Do you use indirect speech more or direct speech more? देखिए, फर्स्ट पर्सन की बात आए, खुद की बात आए, तो वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट। ठीक है। और हमारे हमारे में बड़ी कॉमन ये टेंडेंसी है कि किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ कहा हो, लेकिन हम उसको अपना बना के भी डायरेक्ट स्पीच ही यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, he said, I'll come back here to see you again tomorrow. Now, what kind of a sentence is it? Is it direct or indirect speech? He said, I'll come back here to see you. How do we know it's direct? Hmm, hmm, hmm. Now, look at the second one. अब इसको indirect में कैसे करना है? He said that he would return there to see the following day. In the conversation of the following changes have taken place, the inverted commas around the reported speech, right? The dependence is marked explicitly by introduction. The first and second pronouns change to third person. The tense and the verb undergoes backshift. ठीक है, adverb tomorrow and following day. The close didactic adverb here changes to the more remote there. ये आपको changes पता है ना, direct indirect बनाना आता है, उसका एक analysis दिया हुआ है। So जब हम एक बात को सोचते हैं, when we think about it and we present it, we try to use one of these techniques such as direct and indirect. यहाँ तक बात समझ आई? ये टेक्निक्स जो है, लैंग्वेज टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं when we need to quote somebody else. करते हैं ना, पहले हमने बात सुनी, जैसे मैंने आज कुछ अनाउंस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आई अनाउंस समथिंग टुडे एंड यू नीड टू टेल somebody who's absent today, you will say that ma'am Sadia announced a quiz on this particular day, you were absent. और आप कह सकते हैं she said she will not take this quiz again. Now you're being indirect, right? लेकिन अगर आपने बहुत ही डायरेक्ट होके बताना है, आप कहेंगे मैम सादिया said and I quote, I will not take this quiz again. तो आप वो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह करना चाहते हैं। अगर आप मॉक करते हुए बताना चाहते हैं कि अगर आपने मिस किया तो मैम सादिया आपकी दोबारा क्विज नहीं लेंगे, तो इट्स हाईली लाइकली कि आप ये वर्ड यूज करेंगे जिसमें पर्सनल प्रोनाउन को आप हाईलाइट करेंगे। तो वहां पर आप स्पीच एक्ट भी कर रहे हैं, आप एक डायरेक्टिव स्पीच एक्ट भी दिखा रहे हैं कि मैम ने इस तरह से बोला था, जिसमें आप टोन भी देखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, और अगर मैंने कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई जेस्चर यूज किया ये कहते हुए, तो आप वो भी कॉपी करके बता सकते हैं। इजंट दैट सो? वर्ड्स तो आप मेरे कॉपी कर ही सकते हो, लेकिन कोई अगर कोई फिजिकल एक्शन मैंने किया है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, कोई हैंड मूवमेंट मैंने किया है, तो आप वो भी कर सकते हो। डू यू अग्री? ये जैसे, हाँ, ये जो आप लोग टीचर्स का, आप लोग तो नहीं, लेकिन समटाइम्स हम टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, द वे दे स्पीक, दे हैव सर्टेन वे ऑफ स्पीकिंग। हर एक का अपना तरीका होता है। तो उसमें भी हम टीचर के ना सिर्फ वर्ड्स का कॉपी कर रहे होते हैं, स्टाइल भी कर रहे होते हैं, वॉइस भी कर रहे होते हैं, चलने का अंदाज भी कर रहे होते हैं। तो उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, हर किस्म की स्पीच को हम
टारगेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसको फिर प्रेजेंट करते हैं. दैट इज ऑल दिस टॉपिक इज अबाउट. ये बहुत आसान सा चैप्टर है जो अगर आप एक दफा पढ़ लें आपको समझ आ जाए. स्पीच एंड थॉट एंड प्रेजेंटेशन, इसमें स्टाइल भी आ जाता है. अच्छा, अगली हेडिंग जो है इसमें यही इसी का एनालिसिस चल रहा है. नेक्स्ट हेडिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. ओके, सेकंड इज फ्री डायरेक्ट स्पीच. डू यू नो व्हाट इट इज? फ्री डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो फ्री हो जाए. नो आइडिया. जी. Okay, talking to the character or the other person directly. ठीक है. Direct speech has two features which show evidence of the narrator's presence, namely the quotation marks and the introductory reporting clause. Accordingly, it is possible to remove either or both of these features and produce a free form, which has been called free direct speech. Right? One there where the characters apparently speak to us more immediately without the narrator as an intermediary. For example, he said, I'll come back here to see you tomorrow. I'll come back here to see you tomorrow. I'll come back here to see you tomorrow. Now, Hemingway is found omitting the reporting clause in a clean, well lighted place. He uses this choice to portray the quick to and fro of the conversation between the two waiters. अब देखिए, यहाँ वेटर्स का नाम उन्होंने नहीं लिखा. वो जिस तरह हमारी आदत है स्पीचेस को लिखने का उस तरह नहीं लिखा. वो बस उनकी जो कॉन्वर्सेशन है टू एंड फ्रो वो हमें शोकेस करा रहे हैं. ही इज ड्रंक नाउ, ही सेड. ही इज drunk every night. What did he want to kill himself for? How should I know? How did he do it? He hung himself with a rope. Who cut him down? अब ये दोनों कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, उसमें वो ये जो he said पहले वाले सेंटेंस में तो है, लेकिन बाकी में नहीं है. The other person said, the other character said. No, वो डायरेक्ट एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं. Now this is प्री डायरेक्ट स्पीच. ये स्पेशली ये टेक्निक या ये टेंडेंसी आपको ड्रामा की लैंग्वेज में नजर आएगी. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस एंड एवरीथिंग, ड्रामा को तो हम टच ही नहीं कर पाए, अदरवाइज इसमें हम देख सकते थे. In fact, this is the only portion of some 28 lines of FDS between the initial direct speech and the next narrative sentence. ठीक है, जो narrative sentence आप समझ सकते हैं कि जब वो कहानी में या ड्रामा में एक नरेटर बताना स्टार्ट करता है कि these two characters stop talking and then they move forward to the next scene. कुछ इस तरह से sentences लिखे हैं जिन्होंने narration पे focus करते हो. Without the introductory clauses specifying which waiter says what. Now this is important. यही मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इन दो वेटर्स में हमें नहीं पता कौन से वेटर ने क्या कहा. It becomes difficult to remember which waiter is which. So the confusion is gradually produced in readers' mind. Indeed, one critic, David Lodge, has argued that this is precisely the point of Hemingway's story. Hemingway deliberately encourages the reader to make initial incorrect discrimination between the two waiters, which, when discovered and corrected, amounts to a kind of peripecia. Hemingway, in short, is making things deliberately difficult for the readers to understand in the story. अब आपने ये word कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. Do you know the meaning? The one that I've highlighted? No? ये आपने okay. Hmm. Okay. So it's like a self-realization or thought-provoking thought that comes to the mind of the character. राइट. तो ये वही बात है कि टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जो ड्रामा में यूज होती है. आपको शायद मोनोलॉग का पता हो. व्हाट्स मोनोलॉग और सोलिलोक्वी? वो बहुत कॉमन है. असाइड्स होते हैं कि नहीं? अब अगर एक
अब एकदम से एक करेक्टर जो है वो ड्रामा की स्टेज पे विदाउट किसी नैरेटिव सीक्वेंस और इंट्रोडक्शन आकर कुछ बोलना शुरू कर दे, बी इट अ मोनोलॉग और अ soliloquy, the audiences would lose it for a moment and they will go back and try to connect कि ये इसने एकदम से एंट्री क्यों ली और ये क्या कहना चाह रहा है. Do you understand what I'm trying to say? One author can actually create such difficulties for the writers. जैसे यहाँ पर उन्होंने जो एग्जाम्पल दी है वो हेमिंगवे की दी है. अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो प्रोबेबली इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू यू. लेकिन अगर आपने हैमलेट पढ़ा हुआ है तो एक वो जो बड़ी फेमस soliloquy है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. उसके पीछे उसके पीछे पूरी नरेशन दी जाती है कि किस तरह से जो हैमलेट जूनियर है, जो मतलब अपने बाप के उसको देखकर, गोस्ट को देख के थोड़ा सा इंसेन हो जाता है, के बारे में वो पूरा एक बैकग्राउंड बिल्ड करने के बाद उस soliloquy को हाईलाइट करते हैं. लेकिन अगर वो बैकग्राउंड बिल्ड ना करें तो वो पढ़ने में, थॉट प्रोसेस में और उसकी प्रेजेंटेशन में वो क्या कह सकते हैं, उर्दू में एक वर्ड होता है खलल पैदा करेगा, हर्डल पैदा करेगा, बैरियर, बैरियर इन द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस वो क्रिएट करेगा. डू यू अंडरस्टैंड सो फार कि फ्री डायरेक्ट स्पीच कैसे हर्डल्स क्रिएट करती है? फ्री डायरेक्ट स्पीच जो है, एफडीएस, जो आपके थॉट प्रोसेस, आपके स्पीच और आपकी प्रेजेंटेशन में किस किस्म के हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, मीनिंग मेकिंग को कैसे या तो एनहांस करते हैं या क्रिपल करते हैं. एनहांस कैसे करते हैं? इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. हाउएवर इफ इट फोकस ऑन द मीनिंग, देन इट क्रिएट्स हर्डल्स इन मीनिंग मेकिंग प्रोसेस. उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, एफआईएस. इन्होंने उनको एब्रीविएशंस भी दी हुई हैं. एक सेकेंड. Now there is one figure over here. Let's take a look at it. Decline of interference in report. Narrators apparently in total control of report. Narrator apparently in partial control and not control at all. Varieties of speech presentation. अब आप ये देखिए, ये तीन किस्म की speech presentations आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक पॉइंट पे आपकी जो नरेटर है वो पूरा कंट्रोल में है, एक में वो पार्शियली कंट्रोल में है और एक में वो बिल्कुल भी कंट्रोल पे नहीं है. अभी तक जो हमने पढ़ा वो है डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच है. अब जो हम बात करने लगे हैं वो है free indirect speech. As you can see in this figure 10.1, the form in which between DS and IS is called, DS is direct speech and IS is indirect speech, is called free indirect speech, that is FIS. As its name implies, FIS is normally thought of as a freer version of an ostensibly indirect form. Its most typical manifestation is one where, unlike is the reporting clause is omitted, but where the tense and pronoun selection are those associated with IS, that is indirect speech. I know this is अब देखिए ये जो राइटर है इस बुक का ही, उसने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको लिखा हुआ है, एंड अननेसेसरली उसने इनको एब्रीविएशंस दी हुई है. लेट्स रीड इट टुगेदर अगेन. डू यू अंडरस्टैंड उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि नहीं समझ आई? हम्म, हम्म, ठीक है, अब मेरे साथ आपने पढ़ना है, ठीक है, आप भी देखिए ताकि आपको समझ आए, ताकि मैं आपको एग्जांपल्स बता सकूं. The form in between direct speech and indirect speech is called free indirect speech. ठीक है. As its name implies, free indirect speech is normally thought of as a freer version of indirect form. ठीक है, indirect form तो free version होता ही है ना, जैसे if I say she said she will be late, ठीक है, लेकिन she also said she will not be late. अब यहाँ पर दो किस्म के शीज हैं, मे बी आई एम रेफरिंग टू टू डिफरेंट पीपल, लेकिन मैं उसको क्लियरली मेंशन नहीं कर रही, तो दैट इज फ्री इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे जो दो वेटर्स के बीच में भी बात हो रही थी, ऑल्दो वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात कर रहे थे, लेकिन जब वो नरेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो वो कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है. इट्स मोस्ट टिपिकल मैनिफेस्टेशन इज वन where unlike indirect speech the reporting clause is omitted, but where the
Tense and pronoun selection are those associated with indirect speech. Hence, the following are all free indirect versions of one. He would return there to see her again the following day. He would return there to see her again tomorrow. He would come back there to see her again tomorrow. Now, sentence 14 is an example of free indirect speech because of the omission of the reporting clause. That omission allows the reported clause, which is always subordinate in indirect versions, to take on some of the syntactic possibilities of the main clause, and in this respect share some of the features typically associated with direct speech. अब ये आपको उसी केस में समझ आएगा जब आपको क्लियरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं. Now tell me, take a look. दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ें जो मैंने हाईलाइट किया. Does it make sense? पहले एग्जांपल्स देखिए 14, 15 एंड 16. फिर देखिए 14. Can you explain it for the rest of the class as well? किसी और बहुत ही simple example से, if you can. Very good. Hmm. Hmm. It is, and you very well identified कि यहाँ पर वो जो होते हैं नहीं ये जो इसके साथ लवाजमात she said, he said, उन्होंने कुछ नहीं लिखा. Even second sentence 15 और 16 में देखें, in 15 and 16 sentences which are successively freer versions of 14. Freer कैसे? यहाँ पर हमारे पास tomorrow. ठीक है, टुमारो आ गया. फॉलोइंग डे जो है वो फ्री नहीं है. कौन सा फॉलोइंग डे? टुमारो से हमें पता चलता है कि इट इज नियर, इन फ्यूचर, राइट? Tomorrow and come back in 16 also tell us about the same implication. FIS has a rather odd status in terms of truth claims and faithfulness. It is in a sort of halfway house position, not claiming to be a reproduction of the original speech, but at the same time being more than mere indirect rendering of the original. So you see, it's not that black and white, it is something gray. The syntactic features which we have discussed so far are a means of rendering the semantic status of the particular report clear. It is this semantic status which we regard as primary and which is unclear in the case of free indirect speech. अब इसको दोबारा से पढ़ें. आप सब पढ़ें. अगर समझ नहीं आती तो दोबारा पूछें और करें. अच्छा, इसको सोचने के लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आई है
कि जब एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के बारे में सोचता है और नरेटर उसकी सोच को वहां लिखता है, दैट इज ऑल्सो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। अगर आप गौर करें, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जब वो जो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो कि इन पांचों बहनों की सबसे छोटी बहन को भगा कर ले जाता है, आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। तो उसके बारे में जब एलिजाबेथ सोचती है, उसकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द नरेशन। तो उसमें जो सिग्नल वर्ड्स होते हैं, जैसे शी थॉट, शी फेल्ट, वो नहीं होते। वो सिंपली लिखा जाता है कि हिज मैनर्स, यानी उस कैरेक्टर के मैनर्स वर नॉट सो रिकमेंडेड और अप टू द मार्क फॉर द ऑडियंसेस। वो जब उसका एनालिसिस करते हैं, ऑल्दो एलिजाबेथ को शुरू में वो पसंद आता है, लेकिन इवेंचुअली शी गेट्स टू नो दैट ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ मैन। तो जो एलिजाबेथ के माइंड में जो थॉट्स आती हैं या फीलिंग्स आती हैं, वो प्रेजेंट की जाती हैं रीडर को विदाउट एनी सिग्नल्स। यानी यहाँ नहीं लिखा होता कि एलिजाबेथ थॉट दैट हिज मैनर्स वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं आ रही? चले इसको फिर आप लिख के बताओ। तो इतने किस्म के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं ना कि अब आई एम लुकिंग फॉर द बोर्ड, वेट प्लीज। Okay, now look at this one. Free indirect speech is a narrative technique commonly used in literature to convey a character's thoughts or speech indirectly, blending the character's words or ideas with the narrator's voice. In the novel Pride and Prejudice by Jane Austen, free indirect speech is employed extensively to provide insights into the character's inner thoughts and feelings. Now, these are the examples. For example, the first one is Elizabeth Bennet's thoughts on Mr. Darcy. She began now to comprehend that he was exactly the man who in disposition and talents would most suit her. अब यहाँ उन्होंने नहीं लिखा कि Elizabeth thought, उन्होंने सीधा सीधा प्रोनाउंस से स्टार्ट किया, she began now to comprehend.
etc. etc. Second example देखिए, Mr. Darcy's internal reflection on his growing affection for Elizabeth. His sense of her inferiority, of its being a degradation of the family obstacles which had always opposed to inclination, were dwelt on with the warmth which seemed due to the consequence he was wounding. अब उसने यहाँ नहीं लिखा he thought, उसको लगा, उसने सोचा, उसने परखा, etc. सीधा सीधा उसकी सेंस की बात हो रही है. In these examples, the thoughts and the perspectives of the character are indirectly presented through the narrator's voice, giving readers a glimpse into their inner workings and adding depth to their characterization. Free indirect speech is an effective tool used by particular authors in order to enhance meaning. नाउ डज इट मेक मोर सेंस? अगर आप किसी एक टेक्स्ट को लेके उसका इन सारी चीजों के लिए एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. एनी क्लैरिटी अचीव्ड कि फ्री इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? अभी जो आपके क्लासमेट ने बताया बड़ा क्लियरली बताया, उनको बहुत अच्छे से समझ आया. आप उनको भी कह सकते हैं कि वो आपको समझाएं. जी. हम्म. ऑथर बता रहा है. ऑथर उस हाँ, हम इस वक्त स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तो बात कर ही नहीं रहे. हम सिंपल बात कर रहे हैं कि एक करेक्टर है एलिजाबेथ, वो एक और करेक्टर के बारे में कुछ फील करती है, कुछ सोचती है. उसको उस सोच और उस फीलिंग को शोकेस करने के लिए जिस किस्म की लैंग्वेज ऑथर यूज करता है, उससे हमें पता चलता है कि ये फ्री इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें ऑथर ने कहीं नहीं लिखा शी सेड, शी फेल्ट, एक्सेट्रा. Indirectly it's there, not directly. Indirectly it's there. एंड फ्री इनडायरेक्टली, अब यहाँ पे ये जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी अटैच कर दी, दैट इज फ्री इनडायरेक्ट स्पीच. हम्म. बिल्कुल बिल्कुल. अभी जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में देखा था, उसमें ये सारे चीजें होना लाजमी है. जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने खुद आप लोगों ने कहा कि आपको पता भी है और थोड़ा सा हमने देखा भी. अब ये फ्री इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा ही है कि जो करेक्टर्स हैं उनकी जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है उन्हें इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है. ये जो इस बच्चा कह रही हूँ, जो इस ऑथर ने लिखा है, इसकी बुक हमेशा से ही ऐसी है. आप बार बार पढ़ोगे समझ आएगी. If you read it many times, then it will definitely make sense. It's just that in one single reading it इतना आसानी से समझ नहीं आएगा. आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा. हाँ. आपने क्या करना है, चले मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ टू प्रिपेयर दिस चैप्टर और दिस टॉपिक. कि आपने इनकी हेडिंग्स देखनी है और हेडिंग्स के मुताबिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई भी एग्जाम्पल इसके साथ अटैच कर लेनी है. आप प्राइड एंड प्रेजुडिस का ही बेशक पूरा एनालिसिस इसमें कर लें, या मिसेस डैलोवे का जो भी नॉवल आप लोग पढ़ रहे हो उसमें से कुछ लाइंस लेके उसका एनालिसिस कर लें. इस टॉपिक को भी आपने 10 से 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ for the end term examination. अच्छा, इससे आगे जो बात है इसमें वो एक नजर देख लेते हैं. अब देखिए ये एनालिसिस अभी तक चल रहा है, वो मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ वो आपको वही बताना चाह रहा है कि किस तरह फ्री इनडायरेक्ट स्पीच है और वो किस तरह से काम करती है. अब आप ये पढ़ना चाहें आपकी चॉइस है, नहीं पढ़ना तो बात उतनी सी है, बस उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करने. और आप में से कुछ लोगों की मैंने असाइनमेंट भी देखी, आपने चैट जीपीटी बना के दी है, तो चैट जीपीटी का फिर आप सही वाला यूज करें और रिलेवेंट एग्जाम्पल्स उसको इजी से इजी बनाकर आप जरूर उसको इस्तेमाल करें और अपनी नोट्स बना लें, सो दैट वंस यू सिट डाउन इन योर एग्जाम आप उसको अच्छे से रेफर कर सकें. फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने जी.
पूछ लें, कोई बात नहीं, अगर रेलेवेंट है इस। हाँ, बताएं। नहीं, मिथ्स के बाद हमने एक लेक्सिको सेमेंटिक एनालिसिस भी किया था, वो इंक्लूडेड है। और उससे अब आपको मैं डायरेक्टली तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है विच कुड बी अ stylistic analysis or this one, the particular one that I'm referring to. तो अगर आपको ये लेक्सिको सेमेंटिक भी आता है ना, तो किसकी किस्म का भी एनालिसिस आए, आप उसको डेफिनेटली कैरी आउट कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? ठीक है। और पेपर को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अभी एक आधी और क्लास हमारी रहती है, तो उसमें हम मैं आपको बता दूंगी कि किस किस्म का क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक से आपने कितना का उसमें मेहनत लगानी है, जितना हो सके आई लेट यू। अच्छा, द प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट। अब अगेन, पहले वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, अब वो प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट की बात करेगा, जो अगेन करेक्टर के माइंड से ही रिलेटेड है। माइंड स्टाइल भी आएगा, पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा, और ये सारी चीजें। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने थॉट एक्ट्स भी लिखा हुआ है, जिसमें स्पीच एक्ट्स भी आ सकते हैं। नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स और थॉट एक्ट्स। देखिए, although we have so far concentrated on the novelist's presentation of speech, it would be fair to say that many leading novelists of the 19th and 20th century have been deeply concerned with the portrayal of internal speech. This is because one of the major concerns of the novelist of the last 100 years or more has been how to present vividly the flow of thought through a character's mind. अब अभी तक जो डिस्कशन हुई है वो इसी का क्रक्स, ये उसका क्रक्स है। Hence, thought presentation has come to be inextricably linked with what is usually known as the stream of consciousness. जैसे अभी लाइबा ने जो पॉइंट कहा था कि अभी तक उन्हें यही लग रहा है कि किस तरह से अ, जो इंटरनल फीलिंग्स हैं एक करेक्टर की, उसको एक राइटर है जो एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी आ जाता है। द मोड्स ऑफ स्पीच एंड थॉट presentation are very similar formally, but it should always be remembered that the representation of the thoughts of characters, even in an extremely indirect form like thought acts, is ultimately an artifice. We cannot see inside the minds of other people. I repeat, this is the most important point over here कि हम नहीं देख सकते किसी करेक्टर के माइंड में, एक्चुअली हम through and through नहीं देख सकते. But if the motivation for the action and attitudes of character are to be made clear to the reader, the representation of their thoughts, like the use of soliloquy on stage, is a necessary license. अब आप इसमें वही एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर भी की है, हेमलेट वाली. Once it is accepted that it is reasonable for a novelist to tell us what is in the minds of fictional characters, then it is not surprising that there emerge various experimental techniques like free indirect thought. ठीक है, experimental technique उसको वो ये कह रहे हैं. They are attempts not just to report what the character thinks, but also to render the character's immediate experience or conscious of those thoughts. So, अब आप बताएं, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो समझ ना आया हो? It's just like a summary of the entire thing that we've discussed so far. समझ आई? नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे पढ़ें और क्लास में पढ़कर आएं, और कोई मसला हो तो आप मुझसे बात करें। उसके बाद द कैटेगराइजेशन ऑफ थॉट प्रेजेंटेशन, उसमें भी कैटेगराइजेशन आपको वो देंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक हो गया स्पीच एक्ट्स, और स्पीच एक्ट्स से ही रिलेटेड हो गया थॉट प्रेजेंटेशन एंड स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको स्टाइल एंड फिक्शन बुक है, उसमें मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर है 10 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है और आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें से सिर्फ आपने जो हेडिंग्स है उन्हें समझना है, और एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी की दे सकते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ इसमें मिसेस डैलोवो की एग्जाम्पल्स दी हुई है, तो आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी।
जी जी। हम्म। जी। डिफरेंट ना भी हो तो एक एक बेशक जरूर मेंशन जरूर करें, सो वो मतलब ऐसा ना हो ना कि हम तीन अलग थॉट प्रोसेसेस को इकट्ठा जोड़कर लिख दें। जैसे ओमनिसिएंट वाला क्वेश्चन खतीजा ने बड़ा वैलिड पूछा था कि कुछ तो इस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं, कुछ तो उस तरह से कर रहे हैं, तो हम कौन सा वाला करें? बेस्ट ये होगा कि किसी एक को लेकर उसी तरह से कह दें। जैसे फोर ग्राउंडिंग में हमने डिसाइड किया था कि आप लीच को देख लें, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। लीच को या वेल्स को देख लें, तो जब आप उसका फोर ग्राउंडिंग एनालिसिस करें अगर वो आता है, तो आप एक थेरस के बारे में मेंशन कर दें और उसके बाद पॉइंट्स उसके बनाते जाएं और एनालिसिस करते जाएं। जितने एग्जाम्पल्स देंगे उतना स्कोर बेहतर आएगा आपका। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको मतलब होगा सीधा सीधा टेक्स्ट दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि फलाना किस्म का एनालिसिस कैरी आउट करें। एक क्वेश्चन तो इस तरह का हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूछा जाए कि दिस इज दिस थ्योरी एंड नाउ एक्सप्लेन इट विद दिस टर्मिनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसमें पूछा जाए कि आप बताएं कोई एग्जांपल्स दें, तो वहां एग्जांपल्स आप खुद देंगे। आई अंडरस्टैंड कि वहां आप टेक्स्ट याद नहीं रख सकते, लेकिन आप रेफर कर सकते हैं। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस से अभी हमने जब लुकुशनरी इलुकुशनरी और परलुकुशनरी देखा, तो उसमें टेक्स्ट नहीं था, लेकिन किस तरह डार्सी और एलिजाबेथ आपस में बात कर रहे हैं और उसमें क्या लुकुशनरी इलुकुशनरी हो रहा है वो बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि कितने थियोरेटिकल क्वेश्चन है और कितने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर नोट्स वाला क्वेश्चन है तो वो किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट जी, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद योर क्विज। क्विज के लिए वो जो वीक मैंने आपको बताया है ग्रुप में, उसी को आपने देखना है। लेट मी कंफर्म, वीक नंबर 13, ठीक है। उसी में से आपका एक छोटा सा क्विज हो जाएगा, तो आपने उसे देखा है, राइट। जी जी, पूछे। जी एमन पूछे।